Hello, dear students. So, without any more wastage of time, let's study Paper 2, MA English, Semester 4, Indian Writing and Translation, and the same poet has been prescribed for IGNOU University, that is Indira Gandhi National Open University, and also Chandigarh University Distance Learning Program. I have seen this there also, and there are certain requests from the student side also to make videos on Namthyo Dhasal's Hunger, as well as the other poem that is I Slew the Seven Horses of the Chariot of the Sun. So after this, that too is going to be uploaded. So let's begin how and what the poet says in the particular poem. So Namdev Dhasal, he's a Marathi poet, and you have his poem in English only because of the translation by Dilip Chatre. He's a poet, writer, and human rights activist from Maharashtra. He grew up in dire poverty. Dire is भयंकर, बहुत बुरी तरह poverty में पले बड़े हैं वो. In red light area of Mumbai, that is Golpitha. This is also the name of title of the first volume of his poetry in 1973. His other poetry collections were By a Foolish Old Man, How Educated Are You, Khel, Priyadarshini, in addition to novels also. So he was a socialist, he was an activist, and he belonged to Dalit movement, or you can say he was an active member of this Dalit movement. Dhassel was greatly inspired by the works of Babu Rao Bagul, who employed photographic realism to draw attention to the circumstances which the Dalits and all such people have to endure who are deprived of their rights. तो काफी इन्फ्लुएंस थे रहे हैं वो बाबू राव बगुल से, उनके फोटोग्राफिक रियलिज्म से हूबहू फोटोग्राफ की तरह रेप्लिकेट करके दिखाना इस फोटोग्राफिक रियलिज्म. Dhasal's poems broke away from the stylistic conventions, so he wrote freely. He wrote revolutionary. तो उनकी पोएम में आपको रेवोल्यूशन दिखेगा. He used common vocabulary of Dalits and red light area of Mumbai. तो vocabulary भी वैसी ही है. And now something about his translator. Dilip Chitri, a renowned translator, has been sharing Dhasal's poems beyond the Marathi-speaking world for the past 40 years. Chitra is right when he says Namdeo Dhasal's universe, Namdeo's universe is untouchable. Untouchable too. उनका universe भी untouchable है. It is loathsome and nauseatic universe. आपको ऐसे उल्टी आएगी, ऐसा एरिया है वो जहाँ वो रहते हैं, जो भी वो डिपिक्ट करते हैं. A journey from the sacred to profane, पवित्र से अपवित्र की तरफ, from the clean to dirty, सफाई से गंदगी की तरफ, from sanitized to the unsanitary, from the healthy to the diseased. तो उनकी दुनिया में ये सब दिखाया गया कि all those people who pose to be really good human beings with white clothes in the daylight are the ones who visit these prostitutes of red light area at night. They are the ones because of whom they cannot spend a respectable, you can say, time in society. It's only because of them they cannot have a dignity of labor. They cannot have a respectable position and status in society because they don't let them come out of those areas. So this is what is described. So it's even important to know that what he writes and how he writes is definitely something beyond the grasp of the middle class. We people feel shocked to see, even by the end of the poem Hunger, he has even used abuses. So, in an interview once in 1982, he said that the main, if the aim of social struggle was removal of unhappiness, then poetry was necessary. So he wanted to use poetry to stage a revolution against the exploitation. For him, poetry is politics. Once he told a photographer, Henning Stegmiller, I enjoy discovering myself. I am happy when I am writing a poem. I am happy when I'm leading a protest of prostitutes fighting for their rights. तो ये नाम थे दसल के खुद के वर्ड्स हैं. आप किसी भी आंसर में इनको यूज कर सकते हैं.
फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन पैंथर मूवमेंट, तो इन्होंने हिंदी में मराठी वहाँ महाराष्ट्र में रहते हुए इन्होंने दलित पैंथर मूवमेंट को फाउंड किया, इस मूवमेंट को चलाया. ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दलित पैंथर्स मूवमेंट, और ही इज ऑल्सो नोन एज his poetry collection, Poet of the Underworld, had startled the Marathi literary scene. और इनके लिए लॉरी हॉवेल क्या कहते हैं? Ghazal is both a poet and a panther, and his poetry cannot be separated from his historical, political, and social context. The poetry of this movement has a purpose. The poet spoke out for a community. A community. So the biggest influence on him is that of European poets. He had been a victim of caste system, and definitely he wanted to, showcase everything, what happens with these people. So he wanted revolution, and that is why he got into writing. That's why he is writing. Now, Dhasal's poetic style is quite different from others. He has suffered discrimination himself as a Dalit, and therefore he considered himself as a spokesperson of the oppressed classes. वो अपने आप को इनका spokesperson मानते हुए साफ साफ कहते हैं, I have a mission in life and that is to oppose all kind of exploitations. तो साफ साफ वो कहते हैं कि मेरे को ये सारी जो नेगेटिविटीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है, उनको एक्सपोज करना है. अब जो रिमार्केबल पोम लिखी है इन्होंने, हंगर, ये बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है वेयर ही इज एड्रेसिंग हंगर, बट हंगर की तरफ से जो सारी चीजें हैं वो सपोज ही की जा रही हैं और nobody interrupts him. तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. The speaker in this poem is the poet himself. He Namdev Dhasal ही हैं, who is representative of all the suppressed and depressed classes. He has used we instead of I. तो I करके बात नहीं कर रहे हैं, वो we करके बात कर रहे हैं, which shows that he is representative of the poor. तो पोएम में शुरू में ही बात आ रही है कि अगर आपके पेट में खाना नहीं है तो आपको म्यूजिक भी पसंद नहीं आएगा. सो बिल्कुल बिगिनिंग में ही वो लिमेंट कर रहे हैं कि कैसे हंगर जो है वो हर चीज को तबाह कर देती है, भूख इंसान को पागल कर देती है. और जो बंदा भूखा है, कैन द फायर ऑफ हंगर बी टर्न्ड इनटू पोइट्री? विल द फायर ऑफ हंगर डिस्ट्रॉय म्यूजिक? तो क्या कहते हैं, हंगर जो है इसकी भूख की आग को म्यूजिक में बदला जा सकता है? सो दैट इज हिज क्वेश्चन कि कर सकते हैं क्या, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. He continues to say that a person who is very poor and starving does not have any charm in music, which is very true. Music उस बंदे के लिए बिल्कुल meaningless चीज हो जाएगी. इसके बाद he calls hunger a fruitless thing also, कि जितना मर्जी इसको संभाल के रख लो, इसको मतलब इसको तो संभाल के रख ही नहीं ना सकते. अगर भूख को रख लिया तो आप गए, आप मर जाओगे. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका मुकाबला कौन करेगा, कैसे करेगा, और वो बहुत हिम्मत वाला इंसान ही कर सकता है. यहाँ पे इसको हंगर को ये कंपेयर कर रहे हैं कि हंगर जो है एक टायरेंट की तरह, एक जालिम रूलर की तरह, कभी कैट, कभी माउस, कभी लायन बन के आके उनको तंग करती है. हाउ कैन वी वीक वंस फेस द टेरेबल एंड ट्रबलिक एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, हंगर? तो कहते हैं हम बेचारे कैसे इसको फेस कर सकते हैं, क्या ही हमारी औकात है इसके सामने. और फिर देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस बंदे ने यहाँ पे इस पोइट ने पूछे हैं रीडर से कि वेयर कैन वी पुट इट ऑन ऑक्शन, हम इसको कहाँ जाके नीलाम करें. वेयर एवरीबडी every day sweeps life away, who will buy a crushed heart, who will find it worth bargaining for? तो बड़ी क्वेश्चनिंग कर रहा है कि मेरे टूटे हुए दिल को कौन खरीदेगा, इसका कौन वाली वारस है, इसको कौन संभालेगा. तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि वो किसी मसीहा की वेट कर रहे हैं जो आके उसकी दुनिया को अच्छा कर देगा, बेहतर बना देगा, लेकिन उसको वो कोई मिल नहीं रहा. और फिर हंगर कैसे, हंगर को वो कह रहा है कि हंगर गिव अस द ऑर्डर्स, लेट द लाइटनिंग फ्लैश इन आवर गट्स. तो वो मरना ज्यादा पसंद कर रहा है कि इससे बेहतर है कि मैं शानो शौकत की मौत मरूं. और वो उस हंगर को कहता है कि मेरे ऊपर बिजली गिरा दे, साफ साफ. और हंगर को एड्रेस करते हुए बार बार हंगर को ही एड्रेस किया जा रहा है पूरी पोम के अंदर. Here the hungry man who's addressing the hunger bewails that his hungry and starving brothers have not taken anything. तो हंगर को बड़ी बार वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मेरे भाई बहनों ने कुछ नहीं खाया हुआ. They cannot afford a single grain of food and feel like defeated soldiers who have admitted their end.
If the situation continues like this, then the circumstances would be grave. He remarks, hunger, if we preserve you any longer, everything will turn dark. तो हंगर को साफ साफ कह रहे हैं कि देख तेरे को संभाल के नहीं रख सकते, तुझे अपने अंदर संभाल के रख लिया मतलब सब कुछ अंधकार छा जाएगा, हम मर ही जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो अपने भाई बहनों के लिए भी आवाज उठा रहा है कि हंगर तूने सबको बहुत परेशान किया, तंग किया, ये तो बेचारे बिल्कुल मरने की कगार पे आ गए, और अगर सिचुएशन ना सुधरी, अगर तूने अपनी हार ना मानी, तूने हमारा पीछा ना छोड़ा, तो हम दुनिया छोड़ सकते हैं। But very soon the poet admits that they would fight and would see who will be the winner. तो इसके साथ ही उन्होंने अपनी वो जो एक कंडीशन है, अपना जो एक रुतबा है ब्रेवरी का, वो दिखा दिया। तो कहते हैं कि देखते हैं कौन एंड तक खड़ा रहता है, हम जिद्दी हैं, हम तेरे आगे घुटने नहीं टेकेंगे या तू हमें मार देगी। द हंगर और द डिप्रेस, देखते हैं कौन विनर होता है, हम गरीब लोग या हंगर। This challenge comes from the suffering underprivileged class to the privileged one, which possesses everything and is responsible for inflicting hunger on them. तो कहीं ना कहीं ये एक व्यंग भी है, सटायर है, आयरनी है। यहाँ पे उन लोगों के साथ भी कंपैरिजन किया गया है जो इन सब की सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इनको जैसे भीख ना दे के आप काम दें, आप हेल्प करें उनको इम्प्रूव करने में, उनको आप कोई गुण दें, उनको कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में इनको रखा जाए, इनको कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाई जाए, तो व्हाई वुड दे सेल देयर बॉडीज, व्हाई वुड दे स्टील, व्हाई वुड दे गेट इनटू एंटी सोशल एक्टिविटीज? सिचुएशन ही और होगी, दुनिया ही बदल जाएगी। सो द पोम हंगर एंड्स विद द पजल दैट इज हंगर, व्हाट कम्स फर्स्ट, ट्री और द सीड? तो हंगर को एंड में वो क्वेश्चन पूछता है, कहता हंगर कौन आया पहले, ट्री आया कि सीड आया? अब खुद देखिए, अगर ट्री आया तो ट्री कहाँ से आ गया भाई, सीड आया होगा। अगर सीड आया पहले तो ट्री से ही निकला होगा वो। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी अनएंडिंग पजल है जो वो हंगर को पूछ रहा है, और कहता है कि अगर तुझे आंसर नहीं आया, and in case hunger cannot give appropriate answer to this question, then downtrodden and suffering generation is free to deal with hunger with any kind of filthy, dirty and immoral language. तो कहता अगर तेरे को इसका जवाब नहीं आया, हम तुझे गालियां निकालेंगे। The poem demonstrates this very evidently at the end of the poem, that a man is like a seed that contains the essence of life. He also wants to broadcast a meaningful message that it is the seed, the essence, that matters or counts. Other conditions are secondary. Human dignity is essential, for which the toiling humanity at the bottom should strive to attain and achieve. तो बेसिकली डिग्निटी, ह्यूमन लाइफ में डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो यही कह रहा है कि ये जो लोग हैं एट द बॉटम, दे शुड ऑलवेज ट्राई हार्ड टू मेंटेन देयर रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, और दैट इज व्हाट इज द बेस ऑफ ह्यूमैनिटी, और इसी के ऊपर सारी की सारी इंसानियत खड़ी है। दैट इज ऑल। आई होप दिस वुड बी इजी now to understand, to learn and to write, क्योंकि कुछ कोट्स हैं जो आपको आइडिया दे देंगे कि क्या क्या पोम में बात हुई और कैसे आपको ये सारे जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे उनको अटेम्प्ट करना है। That is all the very best, take care, bye for now.